Hello, student. I hope you are fit and fine at your home. Today we are going to continue our chapter number first from the B part, digital documentation. Our unit name is digital documentation. In this unit we learn about the documentation, how to make a document in computer. So our according to CBSE curriculum, today we are discussing about the applying style in a document. In this chapter we learn about the style, how can we apply the style in a document. So student, now you understand all things. So, student, B part, we continue our today Unit 1, Digital Documentation. Chapter 1, Applying Style in a Document, means how can we apply style in a document. Now we going to discuss about this. First, when we going to start digital documentation, first type of interface in OpenOffice that will become, we select of that option because we are doing related to document. Okay, now next is when you click here, then this interface will become, this window will be come. So are you know all the things related to the bar. So first blue lines is our title bar because it contains program name and program file. After that is a menu bar. After that is our quick access toolbar. Quick access toolbar means directly we use that command on our document. That is our text formatting bar, we can apply in our text. Okay, now we going to continue our chapter. In our chapter topic we describe here, first is style. Second is applying style effect, creating a new style, modifying styles. Now next is we discuss here style. A style is a predefined combination of various formatting feature like font, style, color and size that is applied to the selected text in a document to quickly change its appearance. Means styles क्या होता है, styles एक predefined combination होता है जिसमें various formatting features होते हैं, like font को format करने के लिए, color करने के लिए, size are we can apply in our document and we can change our document appearance, means look, we can change our document. Okay, now we will going to discuss about style. So different style category as listed below. So that is firstly paragraph style, second is character style, third is page style, fourth is frame style and list style, table style we discuss here. If you want to do formatting in your paragraph, then you use paragraph styles. Means you know na what is a paragraph, combinations of lines. If you want to apply that, you use the paragraph styles means in you can align your paragraph left, right, justify, any other. Next is character styles. Character style, if you want to change your writing styles, then you use the character styles. If you want to change your page color, your page design, outline, etc., so you can use the page style. If you want to change frame style, then you use the frame style. Frame means if you want to insert any image and you want to align your text, then you use frame style. List styles means if you explain your topic with the point wise, then if you want to give the some numbering, yeah, some graphical symbols that like this, so you can use list style. You can make your custom list also. Okay, now next is table styles. So there are the different types of table styles available in our that
program and you can use these options. Okay, you see in this interface there is option available which are in our window. That button available in our window, that button used for paragraph, that button used for character, that button used for frame, that button used for page style, and that button used for list. And that is our fill options, and that is our zoomer option, and this is our list. So you can use of this tool. Now applying a style means there are two way to apply style. First is using style pen and second is using fill format mode. Okay, so now today we will discuss here using style pen. Firstly we discuss here style pen. Using style pen you can apply this. According to you go in format tab and that this list will be appear where you want to apply style. Firstly you select the text and after that you go there and write you if you write any text and you apply any types of option from there. You can do bold means darker than the other text, italic change the attention of the text, underline you can do, double underline you can do. If you want to text align left right center you can use that option. Okay, now using the fill format mode, open the style and formatting window and select the style want to apply. फर्स्टली क्या करेंगे हम कि ओपन करेंगे कोई भी विंडो जो हमने फर्स्ट विंडो ओपन की थी और फिर क्या करेंगे स्टाइल करेंगे फॉर्मेटिंग के लिए जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हो. फिर क्लिक ऑन द फॉर्मेट मोड आइकन, दैट इज़ आवर फॉर्मेट मोड आइकन. यू क्लिक ऑन दैट आइकन टू अप्लाई द पैराग्राफ पेज फ्रेम स्टाइल हावर माउस ओवर द पैराग्राफ और फ्रेम और क्लिक मीन्स जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो जिस पे भी आप अप्लाई करना चाहते हो फर्स्टली उसको क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे. आफ्टर दैट यू अप्लाई टू क्वाइट फिल फॉर्मेट. अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हो तो क्लिक ऑन द फिल फॉर्मेट मोड आइकन अगेन, उसी को दोबारा प्रेस कर देना है और प्रेस द आवर नेक्स्ट स्लाइड इज यूजिंग द फिल फॉर्मेट मोड. When you use fill format mode, that type of firstly open the surface, our first interface. Now you type any text. Firstly you select this text and choose the format fill format options. Okay, now to quiet the fill format of mode, click again the fill format mode icon, press the escape key. Means फिल फॉर्मेट मोड से अगर बाहर आना है तो आप इसको दोबारा से क्लिक कर दोगे और आप बाहर आ सकते हो. सो इन दिस इंटरफेस which font you selected, that type heading you use and you can change your appearance of the document. Okay, now creating a new style from the selection. There are the two way to create a new style. Firstly creating a new style from the selection, creating a new style using drag drop option. Today we will discuss only creating a new style from the selection. So now we are going to move our next slide. Firstly ओपन डॉक्यूमेंट. सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट को फॉर्मेट करेंगे. ओपन द स्टाइल पेन एंड सेलेक्ट द स्टाइल कैटेगरी इन विच यू वांट टू क्रिएट अ स्टाइल. ओके, जिस पे भी आपने क्रिएट करना है सेलेक्ट. पहले हम क्या करेंगे डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, उसको फॉर्मेट करेंगे, फिर स्टाइल पेन में जाएंगे और उसको ओपन कर देंगे. क्लिक ऑन द न्यू स्टाइल सिलेक्शन आइकन. न्यू स्टाइल सिलेक्शन आइकन से ये दैट इज़ आवर न्यू स्टाइल एक्शन क्लिक करेंगे इस पर. या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर दूसरा वे भी है हमारे पास. क्लिक ऑन स्टाइल मेन्यू फॉर सेलेक्टेड न्यू स्टाइल ओपन करना है. नाउ वी मूव आवर नेक्स्ट स्लाइड. क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल फ्रॉम द सिलेक्शन means when we create the selection then that types of screen will become. Firstly you open the document, after that you type any text
and go in new style button, and there is list available which font, yeah, which style you want on your text. Then firstly you select of that text and click on OK. Then you look here, there is appearance will be changed. Okay, now the create style dialog box appear, enter the name of the style. मीन्स वो तो हमारा डायरेक्ट ऐसा था कि हम उसमें जो हमारे पास प्री डिफाइंड है उसी स्टाइल को ले सकते थे. अब हम अपना भी क्रिएट कर सकते हैं. द ग्रेट स्टाइल डायलॉग बॉक्स अपीयर, एंटर द नेम फॉर द स्टाइल ऑफ द कस्टम. मतलब कोई भी कस्टम नाम का हमने एक स्टाइल डायलॉग बॉक्स में हमने फिल कर दिया. नेक्स्ट क्लिक ऑन ओके. अ न्यू स्टाइल विल बी एडेड इन योर स्टाइल पैन अंडर द कैटेगरी. यू कैन सी हेयर in this picture you can see that types of style will become dialogues box will become. You give in your choice name. Here we give the custom name, then click on OK. After that you make your style and you can attach in your list. Okay, I hope